Good morning, students. Today I am going to explain Chapter 15, Natural Disasters, Part 2. In first part, we have discussed about the earthquake, which is a very devastating natural disaster. Okay. So now in this chapter, we are going to discuss about the flood and the cyclone. Flood and cyclone. So now, let us see some new words and the hard words. Fine. Banks. Now here banks means nadi ka kinara. Okay. Overflow, that is the flowing over the bank. Occurrence, कोई घटना होना, something happening. Damage, नुकसान करना. Unhygienic means not healthy. Lead, आगे बढ़ना. Outbreak, प्रकोप, आपदा जिसको बोलते हैं. Earthquake, flood, cyclone, these all are the outbreaks. Cholera, disease. Diarrhea, disease. Malaria, disease. Thirst, प्यास लगना. Advantage, फायदा. Spread, फैलना. Fertile means full of manure, good for agriculture. Essential, जरूरी. Embankments. It is the process of protecting the banks of river. नदी के किनारे पे पत्थर लगा के किनारे को बचाया जाता है जिससे कि मिट्टी कट के नहीं जाए नदी के पानी के साथ. ओके. कंस्ट्रक्ट, बनाना. प्रिवेंट, बचाना. एफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ लगाना. ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने को एफॉरेस्टेशन बोलते हैं. फ्यूरी, डर. एकम्पनीड, साथ देना. टाइडल वेव्स, समुद्री तूफान जो वेव्स होते हैं ना समंदर के, उसको हाई वेव्स को टाइडल वेव्स कहते हैं. फोरकास्ट, भविष्यवाणी. प्रेडिक्ट, ये भी भविष्यवाणी है, मतलब प्रेडिक्ट करना कि कब क्या होने वाला है. भविष्यवाणी बताना इज द प्रेडिक्ट. फोरकास्ट इज भविष्यवाणी एंड प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी बताना. बिलोंगिंग्स मतलब अपना सामान जो साथ में जा सके. ओके. बिलोंगिंग्स तो घर भी होता है पर घर हम साथ लेके नहीं जा सकते. वी कैन नॉट कैरी आवर होम, बट द थिंग्स विच वी कैन कैरी, द थिंग्स our own things which we can carry with ourselves, they are called belongings. Evacuate, खाली कराना. Airlift, हेलीकॉप्टर से कहीं से बचाना लोगों को. Stranded, फंसे हुए, जो लोग फंस जाते हैं फ्लड में, इसमें इनको एयरलिफ्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर. रिलीफ कैंप, ये कैंप लगते हैं जहाँ पे जिनका घर खत्म हो गया, द पीपल हु सफर्ड फ्रॉम फ्लड, साइक्लोन और earthquake, they leave their home and they go and live at these places for some time. That is called relief camp. Displaced मतलब अपनी जगह छूट जाना, कहीं और जाके रहना. So these are the new words and hard words. Write down in your notebook. Already I have sent the PDF file. Now the floods. Floods. What is floods? When it rains a lot and rivers fill up with water and start rising above their banks. Then the excess water overflows into nearby land, causing floods. Flood क्या है? पानी जब बहुत बारिश होती है तो the rivers get filled with water and then start rising there above their banks. किनारे से ऊपर आना शुरू करते हैं. Then the excess water in river, they start overflowing into the nearby land. आसपास के जगह में बहना शुरू कर देते हैं. And this is called flood. So causing the flood. It mostly happens during monsoon in most of the part of our country. Okay, in the most of the part of our country, monsoon में जब बारिश का सीजन होता है. Now you can see the devastating picture of floods of Uttarakhand. That is, it happens in 2014, I think. Not 14. No, I think 12. No, maybe in 12. It happens in 12 or 13. 2013. Yes. There, it happened. From Kedarnath it started. This is Kedarnath temple. You can see the condition. Right now it is very beautiful, and before that also it was very beautiful. But see the condition of Kedarnath temple and that area after the flood which happened in 2013. And now you can see the overflowing of water, and it is creating causes. It is very devastating. Now you see in the river how the river is overflowing. Okay, and these are the damages caused by this flood. And the houses which were near to the river. Okay, so this is Uttarakhand flood, the most devastating flood of India. Now
sorry, now the destruction due to flood is continued. I am continuing this topic. Destructions due to flood. It damages the crops, roads and buildings, affect electricity and water supply, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सड़क टूट जाते हैं, तारें टूट जाती है, पानी नहीं आता है. सो दीज आर द डैमेज. कॉज शॉर्टेज ऑफ फूड, ड्रिंकिंग वाटर एंड शेल्टर. अब पानी सब कुछ बहा के ले गया है, देन देयर इज नो फूड, नो ड्रिंकिंग वाटर, नो हाउस, शेल्टर, कहीं जगह नहीं होती है. फ्लड इज सो बैड. अनहाइजेनिक कंडीशंस ऑफन लीड्स टू आउटब्रेक ऑफ डिजीज सच एज कॉलेरा, डायरिया, मलेरिया. मीन्स अनहाइजेनिक कंडीशन कैसे हो जाएगा? सब जानवर बह के आते हैं, आदमी बह के आता है, लोग मर जाते हैं, जगह जगह डेड बॉडीज पड़ी रहती है, एंड दिस क्रिएट्स द अनहाइजेनिक कंडीशन दैट दोज डेड बॉडीज स्टार्ट रॉटिंग. जब खराब होना शुरू करते हैं तो देन देयर इज अ आउटब्रेक ऑफ डिजीज. फिर वहाँ पे कॉलेरा, डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारियां एकदम से बढ़ के आती है. पीपल डाई ड्यू टू हंगर, थर्स्ट एंड डिजीज. लोग आफ्टर फ्लड पीपल स्टार्ट डाइंग ड्यू टू हंगर, खाना नहीं है, थर्स्ट, पानी नहीं है पीने का. Though there is a flood, but that water we cannot drink that water. And disease, फिर बीमारियां होनी शुरू हो जाती है. So these are the destruction and the damage caused by floods. Now advantage of flood, yes, sometimes it has advantage. Flood water brings with the new soil from the hills. Now अब जब पहाड़ से जब पानी बहना शुरू करता है, that flood start coming down, that water brings the new soil from the hills, and the new soil spreads over the land and make it more fertile. तो जो नया मिट्टी आता है ना, with full of humus and manure, it get spread over the land and make the soil more fertile. मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर बाद में बहुत अच्छा होने लगता है. Fine. So now areas affected by flood in India. कौन कौन से इंडिया के कौन कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा फ्लड आता है? दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो. अब पहाड़ से जब बर्फ बहती है ना तो नदी में पानी बढ़ता है. So that is the melting of snow caused the flood in the northern plain. Means north side of the India, the flood caused there due to the melting of snow. Uttar Pradesh, Assam, Bihar and West Bengal are the state which get frequently affected by flood. इन सब जगह में क्या होता है कि सबसे ज्यादा these states, Uttar Pradesh, Assam, Bihar and West Bengal are the states which get frequently affected by floods. Now what are the precautions that we have to take? Precautions मतलब सावधानी हमें क्या क्या लेनी है? न्यूज ब्रॉडकास्ट टू बी वॉच टू गेट द वार्निंग ऑफ फॉर फ्लड. हमेशा न्यूज में आएगा कि फ्लड आने के चांसेस हैं, इसको हमें ध्यान रखना पड़ता है. प्रिपेयर टू मूव आउट टू द सेफर प्लेस, सुरक्षित जगह पे जाना. बिल्ड अप योर स्टोर ऑफ फूड, वाटर, एसेंशियल मेडिसिन. जब लगता है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है मानसून में एंड नाउ देयर इज अ चांस ऑफ फ्लड, देन यू हैव टू स्टोर द फूड. थोड़ा सा हाई राइज एरिया में जाना चाहिए. अगर ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो जाओ. एंड वाटर एंड एसेंशियल मेडिसिन, दवाइयां घर में रहनी चाहिए. हाई एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्टेड अलोंग द रिवर्स. नदी के किनारे, उसके किनारे को बहुत ऊंचा करके पत्थरों से बना के रखना चाहिए जिससे कि पानी ओवरफ्लो नहीं हो, नदी का पानी. एफॉरेस्टेशन, बिल्डिंग ऑफ डैम्स. पेड़ लगाना है, बहुत ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए. इससे क्या होता है कि दैट रूट बाइंड्स द सॉइल and it does not cause the water cycle, monsoon, इन सब चीजों को, पेड़ का जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है, मॉइस्चर कंट्रोल होता है, that it protects us from the natural disasters. बिल्डिंग ऑफ डैम्स, जो जहाँ पे पानी ज्यादा है वहाँ डैम बना के पानी को रोकना, फिर धीरे धीरे रिलीज करना. So these are the things, are the precautions that we have to take. Now the cyclone. It is another natural disaster. A cyclone is very strong wind which accompanied by very heavy rain. The cyclone is very strong wind. बहुत तेज हवा होती है, 150 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली हवा होती है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है. एंड accompanied by heavy rain, means followed by heavy rain. हवा तो चलना शुरू होती है और फिर तेज बारिश होती है. The strong wind often causes high waves called tidal waves. And called, sorry, I have written 2 times, in the sea. So it always happens near the coastal areas. समंदर के किनारे की जगह है वहां पे आता है. Because that strong wind causes the high tidal waves. Tidal waves जो समुद्री waves होते हैं ना, उसको बहुत ऊंचा, बहुत हाई तक ले जाता है. And then it covers the coastal areas. It leads
to flooding the coastal areas. बस जो जब tidal waves इतने हाइट पे जब उठते हैं ऊपर तो ये पानी सीधे सीधे कोस्टल एरियाज के शहरों में चला जाता है. Coastal areas often face the fury of cyclones. So the people who are living coastal areas like the coast of West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Gujarat and Maharashtra, these are the places where the there is a fury of cyclones. The coastal states like West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra are often hit by cyclones and flood. ये सारे स्टेट जो इंडिया के हैं यहाँ पे साइक्लोन्स आते ही रहते हैं, बट नॉट and the coastal area of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. That you have to understand these three states that you are going to study in higher classes. इन तीन स्टेट जो हैं नीचे के तरफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, उनके कोस्टल एरिया पे साइक्लोन नहीं आता, वहाँ के आसपास के समंदर में साइक्लोन नहीं आता है. द मैक्सिमम साइक्लोन कम्स इन द बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में सबसे ज्यादा हिट करता है. इवन अरेबियन सी में भी कम आता है. ओके, so that you are going to study in higher classes कि क्यों ऐसा होता है. Fine. Now this is the Bay of Bengal. Here you can see the center of the cyclone, and from it starts clockwise, anti-clockwise movement is always there of the wind as well as the water, and then they create the high tide and hit these coastal areas. Okay, then they hit these coastal areas, West Bengal का, Odisha का and Andhra Pradesh का. इसी तमिलनाडु, यहाँ तमिलनाडु में नहीं आएगा बट यहाँ पे स्पेशली यू कैन सी द वेव्स कमिंग. ओके, एंड दिस इज द विंड accompanied by heavy rainfall. Recently in 2019 it happened in Odisha. If you see the news in YouTube, you will get the idea about the cyclone. Now the precautions. A good weather forecast system is required to predict the cyclones and to warn the people. Government always they keep a very good weather forecasting system government is having. तो वो cyclone आने से पहले ही बता देते हैं, न्यूज में आप देखते होंगे. And people get time to move to safer place. तो उससे क्या होता है, लोग अपनी सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं. Taking care. क्या होता है साइक्लोन आने के बाद? The army is called in to evacuate people who are affected by the cyclones. Obviously army को बुलाया जाता है, soldiers को बुलाया जाता है. They evacuate the people from the affected areas. They use helicopters to airlift stranded people and to airdrop food and medicines for them. By helicopter they airlift the people who get trapped in those areas, and then also airdrop food packets they give to the people. The government and other agencies like Red Cross set up relief camps for the displaced people. The people who lost their house, who leave their own places, they go to stay in the relief camp. So the government and other agencies, NGOs like Red Cross, they work for these people. Doctors are appointed for the treatment. The people they get affected and then the diseases start. So doctors are also appointed for the treatment of the people. Food, medicines, drinking water, etc. are provided by them. So these agencies, the government, they provide this type of food, medicine and drinking water to the affected people. Thank you.